Hi, I'm Tara Chandiok, the founder of LEAD, a student-run project focused on raising awareness for people affected by leprosy. And this is the Leprosy Mission Trust India, Legacy of Hope, a film designed to showcase the brilliant work that has been done by TLMTI for people with leprosy. Founded in 1874, the Leprosy Mission is India's oldest and longest-running NGO dedicated to leprosy care. Established to support those shunned due to the disease, it has spent 150 years transforming lives through medical care, vocational training, research, and advocacy. TLM's legacy is rooted in compassion and the relentless pursuit of a leprosy-free world. The Leprosy Mission hospitals across 9 states provide specialized leprosy care, including management of leprosy-related complications and prevention and management of disabilities. These hospitals are also centers of excellence for other specialties serving people with disabilities and other neglected tropical diseases. With a focus on healing rather than only treating, doctors and support staff of these government-recognized facilities go above and beyond medical care to ensure that disease or disability does not prevent patients from living a full life. The Leprosy Mission not only gives patients the attention they deserve but also provides an environment for them to recuperate and heal without having to worry about medical expenses or any form of discrimination. The patients feel accepted and valued, which has a direct impact on their health outcome. मेरे हाथ में ये तकलीफ़ था कि मेरे जो हाथ थे वो टेढ़ा हो गए थे, जिससे मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, जो कि खाना खाने में तकलीफ़ होती थी और सोसाइटी में वॉक करने से लोग पूछते थे क्या हुआ। सर, हमारे शरीर में छोटे छोटे गिल्टी दाना निकले थे और तेज़ बुखार आया था। फिर जब हम यहाँ आए तो डॉक्टर ने देखा तो बताया कि हमको ये इन्फेक्शन हुआ, ये बीमारी हुई है और तुमको भर्ती होना। जब मुझे पता चला कि मेरे कुष्ठ रोग है तो उसके बाद जो है मैं जब जहाँ रहता था, मेरी मम्मी और पापा जो है दोनों लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैं दूसरी जगह आ गया। मम्मी ने तो खैर कह दिया था कि किसी को पता ना चले ये रोग, इस वजह से जो है वो छोड़ना पड़ा। और अभी भी किसी से बताते नहीं है क्योंकि बहन है, बहन की शादी वगैरह से। This is a 19-year-old boy who has this painless ulcers and deformities in both the hands, and he developed all this when he was around 14 years of age. So he has shown to doctors in his native place and they could not diagnose leprosy. पहले क्या कहते हैं, दर्द होता था पूरे शरीर में, टैबलेट खाए, दर्द वाली टैबलेट खाए बिना चैन नहीं पड़ता था। 2-2 मिनट क्या कहते हैं 5-5 मिनट या 10-10 मिनट पर टैबलेट खाता था दर्द वाली। जैसे ये पैर में और हाथ में ये मालूम पड़ता था कि कुछ चढ़ा दिया है, जैसे गाड़ी वगैरह चढ़ा दिया है, इतना दर्द बहुत तेज होता था हमको। लेप्रोसी जो है वो सारी बीमारियों से अलग है। ये ना सिर्फ हमें इसे ट्रीटमेंट मेडिसिन दे करके ठीक करना पड़ता है, परंतु बहुत से सोशल एक्सपेक्ट होते हैं, मरीज़ का साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट होता है, उनकी मानसिक रीति से वो काफ़ी बार बीमार होने के कारण और स्टिग्मा के चलते उनका मानसिक जो स्टेटस होता है, मेंटल स्टेटस होता है, वो थोड़ा सा disturbed रहता है। When the diagnosis is made first, we have a system in most of our hospitals where they actually go to the counselor, and the counselor and the social worker actually spend time talking to the patient and seeing that their fears are overcome. They realize the importance of taking regular treatment. They realize the rest of the family, usually counseling is done along with the family. The family knows that they're not going to get leprosy from this person because he's already starting on treatment, so that they don't stigmatize him and move him out. हम लोग जब एजुकेट कर रहे हैं तो उसमें उनको जानकारी हो जाती है कि ये बीमारी है और इसका इलाज है, तो फिर इसलिए हम लोग काउंसलिंग के दौरान उनको इस बीमारी के बारे में बताते हैं कि कैसे हुआ और फिर उसका इलाज क्या है
जो दवाइयाँ उनको दी जाएंगी और दी जाती हैं, और वो पूरे जो भी उनको केयर की ज़रूरत है होनी चाहिए, वो कैसे अपने देखभाल करेंगे। अगर उनके ऑलरेडी उनको असर हो चुका है हाथों पैरों में, और जो कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं बीमारी का, उसका कैसे देखभाल करना है। Since 1874, the leprosy mission has grown from humble beginnings. Leprosy asylums were converted into hospitals, treatment methods improved, and research led the way to a brighter future. From fighting the disease to advocating for inclusion, its mission has evolved. Today, TLM hospitals are centers of excellence, offering comprehensive care not just to people affected by leprosy, but also to the underserved communities around. Generations of people who carried the baton from our founder Sir Wellesley and still carrying on, and to the ends of this earth, be it urban or rural places, where there are many places that have not been reached. People never walked to that places, where leprosy mission reaches to people in the communities to bring them hope. The impact of supporting the work of leprosy is it brings transgenerational change. The change that brings, we may not be able to see in our lifetime, but we are making impact of generations, not just lives. Most people, whether you're government or anybody else, looks to TLM for their expertise to diagnose leprosy, to treat complications of leprosy, to provide specialized footwear, to prevent disability forming. So, and of course, manage bad reactions, which leprosy reactions, because most people in the village, in the community and in the government hospitals don't have the expertise or the skills to do it. And definitely reconstructive surgery, yes, I think that's TLM's thing, but also a lot of disability care. So I think Leprosy Mission's plan is now to have more training programs. So if our skill has been physiotherapy, that's our existing expertise which is already in-house. So develop physiotherapy colleges which will then keep people trained in leprosy. They will know all about the disease and then they'll be able to go out in the community. The Leprosy Mission recognizes the importance of preparing individuals for life, and education is that force which can guide them. TLM's vocational training centers in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal and Uttar Pradesh provide skills training to young people who have been cured of leprosy or whose families have been affected by the disease. It opens up opportunities for dignified livelihoods and a brighter future, fostering independence, dignity and hope. Today, the Leprosy Mission runs several community projects that support sustainable livelihoods and inclusive development of people affected by leprosy belonging to marginalized communities. The programmatic interventions target 10 out of the 17 Sustainable Development Goals, including ensuring good health and well-being, quality education, and reduction of poverty and inequalities. लेप्रोसी मिशन में जब देखा कि हेल्थ केयर से हमने उसको सिर्फ इलाज दे रहे हैं और उनका आगे का उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, हमने उसको किस प्रकार से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एक डिग्निटी लाइफ उसको दे सकते हैं। तब ये चीज़ को जब देखा लेप्रोसी मिशन, तब उनको लगा कि नहीं, हम लोग एक रिहैबिलिटेशन के रूप में भी हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना करना चाहिए। और काट गए। गुड आफ्टरनून। मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था तो लेप्रोसी मिशन नैनी से अवेयरनेस टीम वहाँ जा कर के अवेयरनेस लेप्रोसी क्या होता था है उसकी अवेयरनेस किया उन्होंने। मैं 6 पढ़ता था, इस बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो वहाँ पर उन्होंने जो लक्षण बताया कि पैचेज जिसके हो या तो सूनापन हो, वहाँ पर बाल ना हो रोए, इसकी बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं अपना शर्ट निकाल करके चेक करने लगा तो मुझे ऐसा दिखा कि यहाँ पर पैचेज हैं। तो मैंने वहाँ पर उनको दिखाया तो एग्जामिन के लिए मुझे नैनी हॉस्पिटल में बुलाया गया। तो उन्होंने पाया कि मुझे लेप्रोसी है। तो मैं इसको बिना लापरवाही के मैंने पूरी ट्रीटमेंट लिया और मैं इस समय एकदम फिट हूँ। मुझे पैच के अलावा मुझे कोई भी विकलांगता नहीं है।
leprosy needs a holistic care. A person affected by leprosy will be affected, his health is affected, physically his eyes, hands and legs are affected. Not only that, their social life is very much affected. And a child, you see that they stop going to school. An elderly person, you see, as he stops earning. And a person who is at home, an elderly old age person, and nobody wants to come near him. And we see that the social exclusion, and we see that people losing their job, losing their friends. Friends were no more friends. They are unable to live with their families. So it is a multifaceted problem that we need to address, that requires a multidisciplinary team. And that approach requires lot of resource, lot of support. And that's why anybody who supports the work of leprosy should be highly satisfied of what they are doing. जब हम उनके साथ डील करते हैं तो उनको इनके सब परिवेश को देखना पड़ता है। कई बार परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, तो परिवार के साथ उनको जोड़ना भी हमारे लिए एक अच्छा अनुभव होता है। और जब वो इन सब चीज़ों से उभर के आते हैं और एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है कि हमने किसी इंसान को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाया कि वो सामान्य जीवन जी सके। The fight against leprosy continues in the 21st century, and the Leprosy Mission remains at the forefront. Join them in their mission to restore dignity, opportunity, and hope for people. Come, volunteer, raise funds, and most importantly, speak out against discrimination. Lead the change for empowerment and awareness.